3 chairs you want to use at a time. At a time you are using 3%. So in that case, you will be using permutation or combination like by 7p3 or 7c3. Now, when to use P and when to use C, I told you that for permutation, when you want to choose and arrange, you will use permutation. And if you only want to use, if you only want to choose, then you will be using combination. Definitely, you will choose and then arrange when your internal order is important. When internal order is not important, then in that situation, you will use combination. So for combination, you have to simply choose. अगर आपने ये डिसाइड करना है कि आपके पास 7 में से 4 आपने डिसाइड करने कि 7p4 है या 7c4 है, तो आप ये देखें क्या उन 4 को कोई भी उनमें से 4 सिलेक्ट हो जाते हैं, मीन ए बी सी डी, तो क्या ए बी सी स्विच करने से बी ए सी डी सी करने से क्या कोई, देन यू शुड गो फॉर परमुटेशन. एंड इफ यू थिंक कि ए बी सी डी को सी बी ए डी कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, in that case you will use combination. So if internally order is not important, then you have to use combination, but if the order is important, then you use permutation. There are examples. Yesterday I gave an example that there are 20 students in your class, and out of those 20 students, we are going to choose 3 students, and they all are at same level. All of them, 3 of them, will participate in a quiz, in a science competition. So simply here doesn't matter if you are choosing ABC and then BAC, CAB, so it doesn't matter here. So order is not important. Simply we have to choose 3 people for a science competition. So in that case, you will apply 20C3. But if I tell you, okay, we have to select 3 students, and the first student will participate in science competition, which is being held in USA. And the second student will participate in the competition, which is being held in UK. And the third student will participate in the competition, which is being held in Canada. So here, once you have selected the students out of 20, now it's important that which one will go America, which one will go USA, and which one will go Canada. I told you the first one will be America, second is in UK, and third in Canada. So here the internal order after choosing the further order is also important, that which student will go in which country. So in that case, you will be applying 20p3. If you have to choose only, so it's combination. If you have to choose and arrange, so it's a permutation. Okay. Now, suppose I have 16 cricket players. For a particular match, I have to choose 11 players. So how many ways are there to choose those 11 players? So if I say the numbering of those students, the shirt number of each student is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. There is a possibility that I choose 1, 2, 3 till 11. There's a possibility that I choose 1, 2, 3, 2, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 12. There's a possibility that I choose last 11, mean 6, 7 to 16. So I can choose any one of them, any 11. So basically,
Once you have chosen those 11, they all will play that cricket match. So here only you are choosing. If you're only choosing, it is 20 C16. Sorry, 16 pairs. We have to choose 11 out of 16. So 16 C11. But if I further mention, they will all bat in an order, mean batting. The first person, there is a person A who will come, who will open the inning, second number, third number. So if I further tell you the order of batting as well, I mean, I ask you, you have to choose the 11, and then we have to further arrange so that in that order they will bat. So here, if the further order is important, okay, which player will bat at number one position, who will bat at number two position, who will bat at number three position. So if further order is important, then you'll apply permutation. There is a PSL tournament, Pakistan Super League. I hope you are familiar with that. There are six teams in that PSL, six different cities: Islamabad, Lahore, Quetta, Peshawar. There are six teams. We know in a single match at a time, two teams play the match at a single time. In a single match, two teams play the match. So total there are six teams at a time. Being used are two. Now my question is, if I say that all the teams, every team will play a match with all other teams. I mean, Islamabad will play with Lahore, with Quetta, with Peshawar, I mean, with Karachi. सबके साथ वो match खेलेगी. Karachi भी सबके साथ खेलेगी. So every team will play one match with every other team. Now tell me, how many matches will there be in the tournament? How many matches will there be in the tournament? Will that be 6C2 or 6P2? Why 6 and 2? 6 mean total available teams. In a single match at a time, two teams play the match. Now tell me, will that be 6C2 or 6P2? Combination or permutation? Is the order important here? No, order is not important. At a time, if I say Islamabad is playing, if I say Islamabad is playing with Lahore, then I say no, 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 no. Lahore is playing with Islamabad. Will that make any difference? No, it's the same thing. If Islamabad is playing with Lahore and then I say Lahore is playing with Islamabad, there's a cricket match. That's a one cricket match. Lahore and Islamabad and Islamabad and Lahore, these are not two matches. It's a single match. So here, if you write Islamabad and Lahore, then Lahore and Islamabad. So internally, order of those two is not important. So simply you will count, you will apply 6C2 because order is not important. And if you see 6C2 will be 15. So if it means if all the teams play matches with each other, so total there will be 15 matches. Just a minute, I got disconnected from the other device. Please wait. I'm trying to reconnect. So here we will apply, in this case, we will apply 6C2, mean combination. The internal order is not important here. Okay, let's take another example. We have 5 alphabets: A, B, C, D, E. Then we have, these are the 5 alphabets. Then we have
four numerical digits, 1 2 3 4, and there are two symbols, dollar and hash. We are going to make a password using all these. 5 plus 4 plus 2 mean 9. If I have to use all of them and I want to make a password, so how many passwords can be made? It's 9 factorial. But here I'm changing the question. I'm saying out of, sorry, not 9, these are 11. So 11 factorial. So now if I say, okay, we have to make a password using 8 letters, not all of them, out of 11, any 8. So now tell me how many passwords can be made. If all the cameras are on, then I will change the setting and I'll ask the question. Maheen, please switch on your camera. एक दफा पहले ऑन कर ले, मुझे कंफर्म हो जाए आप पे, फिर मैं सेटिंग चेंज कर. Okay, now G, my question is that out of 11 we have to make the arrangement for the password. So at a time we will be using 8, maybe those 8 can be alphabets, numeric symbols, just combination of them. So will that be 11C8 or 11P8? Yes, Huda. 11P8. Yes, it will be 11P8 or 11P8. Why 11P8? We want to see the internal arrangement is important or not. Once you have selected 8, say alphabets and whatever, so क्या उनकी further आपस में switch होने से different password बनेगा? Yes, different बनेगा. अगर 3 digit password अगर आपने ABC decide किया है, so you can't open that with ACB. So internal order is important. So you will apply 5, 11, P8. Now I'm going to apply the condition that you have to make a password using 3 alphabets, 3 numeric, and 2 symbols. That's the condition. पहले 11 में से कोई से 8 आ जाए. अब कंडीशन ये है कि आपके पास अल्फाबेट्स 3 होने चाहिए उस पासवर्ड में. 3 should be numerics and 2 symbols. So Burhan, what will be that? Sir, 5C3, 3C4, sorry, 4C3. You are applying combination. जी सर, ऐड करेंगे Do इन्होंने. we have to apply combination here? अच्छा नहीं, परम्यूटेशन आएगी सर, सॉरी. परमुटेशन है और आपने साथ मैंने की थोड़ा सा सुना, आपने कहा है ऐड करेंगे. So जी 3 सर. alphabets mean out of 5 you have to use 3. So 5P3. और मीन ऐड करना होता है एंड मीन आपको मल्टीप्लाई करना है. क्या 3 alphabets and 3 numerics and 2 symbols होने चाहिए? 3 alphabets और 3 numeric और 2 symbols. जी, it is the case of and. और अगर होता 3 alphabets और 3 numeric का मतलब हमें तो टोटल 8 बनाने हैं, तो 8 तो तब बनेंगे जब 3 alphabets and 3 numeric and 2 symbols होंगे. तो so that's the end. So 5 में से 3 you will be choosing, and 3 में से okay, further 3 में से 4 में से 3, 4P3, and then 4 2P2. So 5P3 into 4P3 into 2P2. Okay, then आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था
11p8 उसको एक और वे से किया जा सकता था, लेकिन वो डायरेक्ट मैंने परमुटेशन लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमुटेशन इज बेसिकली आफ्टर चूजिंग यू हैव टू अरेंज एज वेल। लेकिन अगर मैं उसको यूं करूं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को, 11 में से 8 चूज करने और फिर अरेंज करने, तो मैंने डायरेक्ट 11p8 लिख दिया। द अदर वे इज कि आउट ऑफ 11 आई एम चूजिंग 8, आई एम अप्लाइंग कॉम्बिनेशन 11c8। मैंने सिर्फ चूज किए हैं, आई नो कि यहां पे सिर्फ चूज किए मैंने। अब इनको मुझे पता है कि फर्दर आपस में स्विच करने से देयर आर डिफरेंट पासवर्ड, तो उन 8 को इफ आई अप्लाई 8 फैक्टोरियल, चूज करने के बाद मैंने 8 फैक्टोरियल अप्लाई कर दिया, मीन कि अब उन सबको आपस में अरेंज भी कर दिया। सो इट्स द सेम थिंग। 11c8 मीन चूज किया और फिर 8 फैक्टोरियल मीन अरेंज कर दिया। सो 11c8 चूजिंग एंड देन अरेंजिंग। सो 11c8 टाइम्स 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11p8। सो परमुटेशन डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, now the next third part is that password must include two symbols. Must include both symbols. So must include both symbols. Different ways हैं इसको करने के। तो इसका मतलब मैं अपने माइंड में ये रखूं कि वो दोनों सिंबल तो मैंने करने ही करने हैं। They are selected to make the password. Only I have to take out okay, again connectivity issue. Now I have changed the network. Okay, I was discussing the question in which now you have to both the symbols must be there always. So what will I do? Because I know that both the symbols should be in the password, so I have to choose only remaining 6 out of 9. और फिर उनमें से जो 6 चूज होंगे वो इन 2 के साथ आपस में हर तरह की अरेंजमेंट भी करनी है आपने। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें ये डिसाइडेड है कि वो 2 दे आर इन द पास। यस समीर। Sir, I didn't understand where you got the number 6 from. Could you please explain that? Okay. So basically there were 5 alphabets, 4 numerics, 5 alphabets, 4 numerics and 2 symbols. We know that we have to make a password of 8 digits. Now it is given that that password must include both symbols. तो हमने ये देखा कि वो दोनों सिंबल तो हमेशा पासवर्ड में होंगे ही होंगे, तो वो हमने पहले ही पिक कर लिए कि वो तो पासवर्ड में है ही है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर देम, वो तो दे विल ऑलवेज बी इन द पासवर्ड। सिर्फ आपका रिमेनिंग जो 9 डिजिट्स हैं उनमें से फर्दर यू हैव टू चूज 6।
और जो वो 6 चूज करेंगे फिर इन 2 के साथ सिंबल्स के साथ आपस में हर तरह स्विच भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि 9 में से 6 को चूज करता हूं। चूज करने का ये मतलब यहां नहीं है कि मैं उनका ऑर्डर इंटरनली इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 6 चूज कर लिए तो ऑलरेडी 2 सिंबल हैं मेरे पास जो कि पासवर्ड में है ही हैं। सो दो 6 एंड दोस 2 ओवरऑल आई गॉट 8। उन 8 का I'll take the factorial. 8 factorial mean now I'm making all the possible arrangements by applying 8 factorial. So in this is a condition in which both the symbol will always be there in the password. Okay, one more example. If we have 6 girls and no 6 boys and 4 girls. We are going to make a team of 5 people out of these 6 boys and 4 girls. So we have to choose a team. We have to choose a team. Repeating, we have to choose a team of 5 people. So choose से पता चल गया कि सिर्फ आपको choose करना है, कहीं arrange नहीं करना. We have to choose, we have to select a team of 5 people. So further arrangement is not important. So we have to apply throughout combination in this question. G, in how many ways you can choose a team of 5 people out of these 6 plus 4, 10? So quite easy. What is that, Samir? Sir, I didn't. Your microphone cut off. Could you repeat that? Okay, I am saying you have to choose a team of 5 people out of 6 boys and 4 girls. So you choose mean you have to use combination definitely. So how many teams can be made? In how many ways you can choose the team of 5 people from 6 boys and 4 girls? No restriction. Sir, is it Samir? 10p5? It's 10c5, not p5. It's a combination. I told you internally order is not important. Simply you have to choose the team of 5 people. You don't have to arrange them further. I told at the start that you have to simply choose a team of 5. Don't arrange them. Second part now, you have to choose a team in such a way that there are 3 boys and 2 girls in the team. Aisha, 3 boys and 2 girls in the team. 10C3 into 10C2. आयशा, जब आपने 10c3 कर दिया आपके माइंड में ये था कि आप बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप टोटल 10 में से कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें गर्ल्स भी आ जाए। तो आपने अगर बॉयज 3 करने हैं तो बॉयज में से सिलेक्ट होंगे। सो आउट ऑफ 6 यू हैव टू चूज बॉयज। सो 6 बॉयज में से बॉयज 3 चूज करें तो 6c3। नाउ दिस इज मेकिंग श्योर कि यू आर चूजिंग बॉयज। आप जब 10 में से कर रहे थे तो पॉसिबिलिटी उसमें गर्ल्स भी आ जाती। So 3 boys mean 6c3 and 2 girls. Okay, क्या होगा 4c2. So this is the 3 boys and 2 girls. Okay. Four girls and 1 boy. 4 girls and 1 boy. 4 girls and 1 boy. Sanan. Sir, 6C1. Good. So simply इसमें 6c1 भी लिखें तो भी ठीक है।
क्योंकि फोर ऑल फोर विल बी देयर, सो 4C4 अगर कोई लिखता है कि फोर में से करनी है तो 1 ही होगा इनटू 6C1। तो सिंपली अगर 6C1 भी लिखें तो भी ठीक है, 4C4 इज 1। सनान प्लीज म्यूट। सो अगर सिंपली 6C1 लिखें तो भी ठीक है। तो 4C4 का आप बताना चाह रहे हैं कि उन 4 में से 4 चूज की, जो कि हमेशा होंगी, इनटू 6C1। ओके, फोर्थ पार्ट, there is a particular boy who don't want to be in the team when there is a particular girl in that team. कोई एक स्पेसिफिक बॉय है वो, और एक कोई स्पेसिफिक गर्ल है वो, दोनों एट अ टाइम टीम में नहीं हो सकते। और फर्दर कंडीशन ये है कि देयर शुड बी 3 boys and 2 girls. There should be 3 boys and 2 girls in the team. लेकिन एक स्पेसिफिक बॉय अली और एक स्पेसिफिक गर्ल क्या नाम कुछ भी रख लें, both can't be in the team at a time. दोनों एक ही दफा एक टीम में नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे टीम में नहीं होने चाहिए। there is a particular boy and there is a particular girl, वो at a time दोनों टीम में नहीं हो सकते। जी खदीजा, just tell me the strategy, not the answer. क्या स्ट्रेटजी होगी इसमें कि दोनों टीम में ना हो? जी देखिए इधर, दोनों टीम में अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि बॉय इज इन द टीम, गर्ल आउट, सो बोथ आर नॉट देयर इन द टीम। एक ऑप्शन ये है, बॉय इज, दैट पर्टिकुलर बॉय इज इन द टीम एंड दैट पर्टिकुलर गर्ल इज आउट ऑफ द टीम। सेकंड ऑप्शन इज दैट पर्टिकुलर बॉय इज आउट ऑफ द टीम and girl is in the team. That's the second option. There is another third option as well. What is that option? Both are out. Boy, that particular boy is out of the team and that particular girl is also out of the team. Right, Huda? So how will you make the first one? Boy in and girl out. It looks that you are busy. Am I right? Yes, I was right. G. Boy is in the team and girl is out of the team. So how to make the combination for this one? Please see here now. That's an important, ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली पास पेपर में आता है। सुनिएगा इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आई होप कि इतना वो क्लियर हो गया कि जब आप चाहते हैं कि दैट पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल बोथ शुड नॉट बी इन द टीम एट अ टाइम, तो एक यही 3 केसेस बनते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले बॉय इज इन द टीम मीन आई विल कंसीडर दैट पर्टिकुलर बॉय विल प्ले डेफिनेटली, राइट। तो मैं फिर ये कहूंगा कि दैट पर्टिकुलर बॉय, उसको मैं कहूंगा ही सिंपली ही कैन गो इनटू द ग्राउंड, यू आर सिलेक्टेड, आप तो टीम में होंगे। सो रिमेनिंग 5 में से 5 बॉयज में से आई हैव टू चूज ओनली 2 बॉयज, 5C2। व्हाई 2 बॉयज? because one boy is already chosen, that particular boy is in the team, so remaining 5 में से I have to choose only 2 and the girl is out मीन हमारे पास अब ऑप्शन, हमने गर्ल को आउट कर दिया पहले कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो टीम में सिलेक्ट हो। तो इसका मतलब दैट गर्ल इज आउट, हम उस गर्ल को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। सो फ्रॉम द रिमेनिंग 3 गर्ल्स यू हैव टू चूज एनी 2, 3C2।
जी सेकंड केस समझें, वो भी उसी तरह है तकरीबन, लेकिन अगर वो नहीं समझ आया तो ये कोशिश करें। बॉय इज आउट ऑफ द टीम का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर बॉय, वी आर सेइंग कि ही इज आउट ऑफ द टीम, सो ही कांट बी सिलेक्टेड। सो 6 में से चूज नहीं करना, फिर आपने 5 में से करना, क्योंकि वो तो आपने डिसाइड किया है कि वो तो टीम में आ ही नहीं सकता, तो 5 में से आपने 3 बॉयज चूज करने हैं। एंड गर्ल इज इन द टीम, दैट पर्टिकुलर गर्ल इज इन द टीम मीन कि वो गर्ल तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि वो शी विल प्ले डेफिनेटली, वो ऑल द टाइम वो तो खेलेगी खेलेगी, तो शी इज सिलेक्टेड। So from the remaining 3 girls, you have to choose one more. Already one is chosen. So 3C1. Boy and girl both out. So दोनों को हम कंसिडर करेंगे कि दोनों आउट हो चुके हैं, दोनों टीम से आउट हैं, तो हम उनमें से चूज ही नहीं करेंगे। तो 6 की बजाय 5 बॉयज में से चूज करेंगे और 4 गर्ल्स में की बजाय हम 3 में से चूज करेंगे। So 6 boys, 1 out already. So 5C3 and girls 3C2. So these are the 3 options. In सबको आप add कर लेंगे तो you'll get those possibilities in which boy and girl, that particular boy and that particular girl is not in the team. दोनों इकट्ठे टीम में नहीं आ रहे। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि दोनों को इन कर दें और टोटल में से माइनस कर दें। दोनों को इन कर दें, आप वही चाहते हैं कि दोनों इन ना हो, तो दोनों की इन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें और टोटल सेकंड पार्ट में से माइनस कर दें, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपने टोटल फाइंड किया हुआ है। Out of 6, 3 boys, out of 4, 2 girls. ओके, बहुत सी चीजें और भी हम साथ साथ करेंगे। अभी हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास पेपर्स के, तो फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ हमारे फर्दर आइडियाज क्लियर होंगे। रिमेंबर कि फैक्टोरियल आपके जब सब यूज हो रहे हो तो फैक्टोरियल यूज करेंगे, आपस में डिफरेंट अरेंजमेंट भी अगर करनी हो। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस याद रखें, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, परमुटेशन में ऑर्डर इंटरनल इंपॉर्टेंट है। सिंपली चूज करना हो तो कॉम्बिनेशन, चूज के बाद फर्दर अरेंज करना हो तो परमुटेशन। ओपन योर गूगल क्लासरूम, आई हैव अपलोडेड द वर्कशीट देयर। Download the worksheet with the name Permutations and Combination, Chapter 2. Okay, let's start the first question. May, June 2002. The first question is May, June 2002, question 5. Ji, please attempt that question. Ji, attempt this question now. The digits of the number 1, 2, 2, 3, 6, 7, 8 can be rearranged to give many different 7-digit numbers. Find how many different 7-digit numbers can be made if there are no restrictions.
Okay, here the digits. So what's the answer of part 1? There are 7 digits. So all you want to find the total number of words, total number of numbers that can be made. So 7. So all they can be switched. So 7 factorial. Because 2 is being repeated 2 times. So divided by 2 factorial. So 7 factorial mean every number is switched with each other. So you will find a total possible outcomes. But we know that 2, when both the 2's are switched with each other, कोई नया number नहीं बनता. So divide कर देंगे 2 factorial से. Okay, then second part, the digits 1, 3, 7 in any order. In any order का मतलब इसका मतलब ये है कि 1, 3, 7 भी हो सकता है, 7, 3, 1 भी हो सकता है, 3, 1, 7 कोई भी order हो सकता है. Are next to each other. So 1, 3, 7 are next to each other. G, we did these type of questions as well. Next to each other. बताएं कैसे होगा ये next to each other. If you remember, we have to make 1, 3, 7 one group. So 1, 3, 7 का आप एक ग्रुप बना लेंगे. The other numbers 2, 2, 6 and 8. So if we consider 1, 3, 7 a one number, and total there will become now 2, 3, 4, 5 numbers. So it will be 5 factorial. G, is that the final answer 5 factorial? जी बताएगा कोई इसका आंसर क्या होगा. 5 factorial तो समझ आ गया होगा सबको कैसे है, लेकिन 5 factorial is not the final answer. ये हमने फर्स्ट डे किया था. Sir, 3C3 में जी होगा क्या? unmute yourself if you want. 3C3 यहाँ पे 3C3 3C3 नहीं होगा, 3P3 होगा अगर होगा भी तो. क्योंकि 1, 3, 7 3C3 का मतलब 3 में से 3 चूज कर लो. 3P3 का मतलब 3 में से 3 चूज करो, उसके बाद उनको आपस में अरेंज करो. उसने कहा कोई भी ऑर्डर हो सकता है, एनी ऑर्डर. सो 3 फैक्टोरियल हमने फर्दर मल्टीप्लाई करना है. वो क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 1, 3, 7 आपस में तो स्विच हो सकते हैं ना. 7, 3, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7, 3. सो इनटू 3 फैक्टोरियल. तो टोटल पहले आपने 1, 3, 7 को एक बॉक्स कंसीडर किया. तो जब एक बॉक्स किया तो टोटल आपके पास 5 डिजिट्स बन गए. तो 5 फैक्टोरियल मीन हर तरह आपस में स्विच होंगे. लेकिन 1, 3, 7 आपस में स्विच हो तो कोई डिफरेंट न्यू ऑर्डर नहीं बनता. सर 5 को मीन 2 से आपस में डिवाइड स्विच होने के भी 5. तो जी मैं उसकी तरफ आऊंगा अभी. सो आपके पास ये 1, 3, 7 आपस में स्विच हो सकते हैं. तो इंटू 3 फैक्टोरियल किया है. और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल जब हमने किया तो 2 नंबर्स ऐसे थे जो कि रिपीट हो रहे थे. उनके आपस में स्विच होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना था. तो हमने तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है. So 5 factorial into 3 factorial over 2 factorial. The numbers 1, 3, 7 are next to each other. Okay, third part says these 7 digits numbers are even. These 7 digits numbers are even. Make a strategy for this now. So if you want to find the total numbers using all these 7 and they are even as well, तो इसको कैसे करेंगे? So the hint is case to make even number, the last digit should be an even. लास्ट पे 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए. सो लास्ट डिजिट 2, 6 और 8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता.
जी, किसी ने कोई किया तो बताएं, शेयर करें ताकि मुझे आइडिया हो कहाँ तक आप पहुंच चल रहे हैं साथ साथ। सर मैंने 6 फैक्टोरियल इंटू 3 किया। जी, आयशा ने 6 फैक्टोरियल इंटू 3 किया। जी, और कोई बताना चाहता है? सर मैंने भी 6 फैक्टोरियल आपने भी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 किया। 6 factorial plus 6 factorial over 2 factorial plus 6 factorial over 2 factorial. So Zaha, I think you are saying कि 6 factorial plus 6 factorial 2 times you will divide by 2 factorial and 1 time you will not divide, right? That's what you are saying? Yes, you are right. Okay, it's not 6 factorial times 3, it's basically 6 factorial divided by 2 times 2 हो सकता है। क्यों? देखिएगा, आप अगर लास्ट डिजिट फिक्स कर दें 8, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये कि लास्ट डिजिट 6 फिक्स कर दें, एक ऑप्शन ये कि लास्ट डिजिट 2 फिक्स कर दें। अगर हमने लास्ट डिजिट 8 फिक्स कर दिया तो बाकी जो 6 डिजिट्स हैं वो सारे आपस में स्विच हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और उनमें नंबर 2 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर आपने एंड पे 6 फिक्स कर दिया तो भी रिमेनिंग 6 के लिए यू हैव 6 फैक्टोरियल, और उनमें जो रिमेनिंग 6 नंबर उनमें देयर इज नंबर 2 2 टाइम्स आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आपने 2 एंड पे फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग जो 6 नंबर्स हैं दे विल बी 6 फैक्टोरियल, और उनमें 2 एक ही दफा आ रहा होगा, रेपिटेशन नहीं हो रही होगी, सो डोंट डिवाइड विद 2। सो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, या आप इसको 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 कर दें प्लस 6 फैक्टोरियल, राइट? जी, इज दैट क्लियर? Okay, now start May, June 2003. A committee of 5 people is to be chosen combination from 6 men and 4 women. In how many ways can this be done? बहुत simple है. If there must be 3 men and 2 women, there must be 3 men and 2 women. So same question almost, बल्कि exactly वही numbers हैं. मैंने girls और boys दिए थे, men और women है यहाँ पे. So 6 C3 into 4 C2. Part 1. Then part 2, if there must be more men than women on the committee. More men than women. So second part, options are more men than women mean 3 men and 2 women. 4 men and 1 woman. 5 men and 0 women. So these are the 3 options in which you will see the number of men are more than women. There is no other option. So this plus this plus this or this or this. So 3 men and 2 women आपने part 1 में किया हुआ है. 6C3 into 4C2 or mean plus 4 men and 1 woman. 4 men means 6C4 into 4C1. 4 men, 1 woman, or mean plus 5 men, no woman.
So 6C5 into 4C0, 4C0 ना भी लिखें, 1 के इक्वल होता है. So these are the three options in which the number of men, इनको add कर दें तो number of men will be more than women. आपको इतना ही नहीं करना, आपको आंसर्स भी निकालने होते हैं, इनके फाइंड करने होते हैं. Third part, if there must be 3 men and 2 women, right? And one particular woman refuses to be on the committee with one particular man. Same question again. One particular woman refuses to be on the committee with one particular man. So refuses mean, तो इसका मतलब आप क्या करें, that particular first man in, woman out, man out, woman in, both out. इनको ऐड कर लें. या फिर एक और ऑप्शन है इसको करने की कि दोनों को इन करें और टोटल में से माइनस कर दें. मैं इस तरीके से अब करता हूं, पहले मैंने किया था अलग अलग. टोटल में से मैंने माइनस करना है बोथ इन. सो टोटल क्या है, मतलब टोटल मीन कि आपको 3 men 2 women 5, नॉट 5, टोटल 6 men में से कोई कंडीशन नहीं है, 6C3 into 4C2, ये है टोटल. मीन आपको 3 men and 2 women चूज करनी है. 6C3 4C2, उसमें से आप माइनस करेंगे हम वो जिसमें दोनों बोथ आर इन द टीम, बोथ आर इन द कमिटी. ओके, दोनों अगर कमिटी में इन हैं तो इसका मतलब मुझे 3 men चूज नहीं करने, मुझे 2 करने हैं. और क्योंकि 1 man इज ऑलरेडी इन द टीम, सो रिमेनिंग 5 में से आई हैव टू चूज 2, 5C2. And that particular woman is also in the team, in the committee. So already one woman is already in the committee. So 4 में से नहीं, 3 में से I have to choose one more. So इस तरीके से भी कर सकते हैं. पहले जो मेथड बताया एग्जांपल वाला वो भी कर सकते हैं. Man in, woman out, man out, woman in, both out. उनको ऐड कर लें. और यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को इन कर दिया, जिसमें वो जो हमें नहीं चाहिए उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. I hope you got it. आपने सिर्फ इतना नहीं करना, आपने कैलकुलेशन भी करनी है इसके आगे. Okay, now May, June 2004, 5, 6, 7, 8 and 9. ये next 5 questions मीन May, June वाले जो questions हैं वो आपने attempt करने हैं. हो सकता है आपसे कोई question ना हो, सारे गलत हो जाएं, बट कोई बात नहीं, हम इन सब questions को डिस्कस करेंगे जिन जिन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने इनको attempt जरूर करना है आज. So you have to attempt the next 5-6 questions हैं जो कि मई जून वाले हैं, वो आपने आज attempt करने हैं. कल हम इनको डिस्कस करेंगे और फिर आगे अक्टूबर नवंबर वाले भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. राइट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज.